बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट हसन रज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन डायरी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रीवियस 4 ईयर के पेपर्स को। सब्जेक्ट है लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, LLB 5 ईयर पार्ट 4 है। एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2023 है। सेक्शन ए में है क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस एंड एज प्रोवाइडेड इन TPA ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द मॉर्टगेज, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ मॉर्टगेज। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ लीज, हाउ इट इज़ मेड, हाउ इट कम्स टू एन एंड। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्शलिंग सिक्योरिटीज़। सेक्शन बी है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। क्वेश्चन 5 एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर फिलिंग रेफरेंस टू द कोर्ट। सेक्शन सी है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। क्वेश्चन 7 है व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज़ ऑप्शनल। Question 8 है what is remedy available to the persons aggrieved by the order of the sub registrar। Section D है Succession Act 1925। Question 9 है explain the law relating to wills and provided in Succession Act 1925। Question 10 है what is the domicile, explain the procedure for acquiring the new domicile। नेक्स्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी का एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2022 LLB पार्ट 4 लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट है। सेक्शन ए में है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। एक्सप्लेन द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफ़र बाय अनऑथोराइज्ड पर्सन हु subsequently acquires the interest in property transferred as provided in the section 43 of Transfer of Property Act। Question 2 है what is sale, what are the rights and duties of the seller। Question 3 है how is the lease terminated, what are the rights and duties of a leasee। Question 4 है explain the law relating to the transfer of property by way of gift। सेक्शन बी है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। क्वेश्चन 5 व्हाट इज़ अवार्डेड बाय द कलेक्टर, हाउ द अवार्ड इज़ मेड। क्वेश्चन 6 है व्हाट इज़ रेफरेंस टू द कोर्ट, व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ फिलिंग द रेफरेंस। सेक्शन सी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। क्वेश्चन 7 डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। Question 8 what is the remedy available for a person aggrieved by the order of sub registrar। Section D has Succession Act 1925। Question 9 what are the content of application for the succession certificate। Question 10 है what write short note on any two codicial probate and थर्ड नंबर पे है will। नेक्स्ट है हमारे पास एनुअल एग्जामिनेशन 2021 LLB पार्ट 4 लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन ए में है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन द लॉ रिलेटिंग टू द एक्शंस एज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 35 इन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन द राइट ऑफ मॉर्टगेजी टू सेल एंड foreclose mortgage property। Question 3 है define sale, how it is made, explain the rights and duties of seller। Question 4 है what is lease, how it is made, how to comes to an end। Section B है land acquisition act 1894। what is the difference between the reference to the court under section 18 and section 30। Question 6
What is market value? How market value is determined? Explain. Section C है Registration Act 1908. Question 7. Is there any remedy is in law against the order of registrar? Discuss. Question 8 है What is the law relating to the place for presenting documents for registration? Section D है Succession Act 1925. Explain the transfer of property by gift made in the contemplation of death under the Section 191 of Succession Act. Question 10 है What do you understand by succession certificate? What are the restrictions on the grant of succession certificate? नेक्स्ट हमारे पास है एनुअल एग्जामिनेशन 2020 LLB पार्ट 4 लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन ए में है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू एन अनबोर्न person as provided in the Transfer of Property Act 1882। Question 2 है explain the doctrine of lis pendens। Question 3 है what are the rights and liabilities of a buyer। Question 4 है what are the rights and duties of lessor। Section B है Land Acquisition Act 1894। Question 5 explain the procedure of acquisition of land for the companies। Question 6 what are the matters which are to be considered in determining the compensation by the court। Section C Registration Act Registration Act 1908। Question 7 what are the document of which registration is optional। Question 8 है what is the procedure of registration of will as provided in the Registration Act 1908। Section D Succession Act 1925 what are the content of succession certificate? Explain in detail। Question 9 explain the following briefly। Probate बी नंबर पे है लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये ले दोस्तों ये लास्ट प्रीवियस 4 ईयर के पास पेपर हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हवाले से पिछले 4 सालों में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप इनको क्वेश्चंस को तैयार कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे पेपर्स में कामयाबी हासिल होगी। और नेक्स्ट इस तरह की वीडियोस को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके ताउन का मशकूर।